Hello everyone. We were discussing about the world's classification of the climate given by the Köppen in his scheme. And we have discussed the A type of climate that is known as tropical rainy climate. We have also focused upon the B type of the climate, that is the dry climates of the world. Let us discuss about the C type of the climate that is given by the scholar Köppen. C type of climate represents the warm temperate climate. C type of climate is located in the temperate belt of the world. And we know that temperate belt of the world is between the latitudes 23.5 degree north and 23.5 degree south to 66.5 degree north and 66.5 degree south latitudes. So C type of the climate is located in the temperate belt of the world. But this temperate type of the world is, as the warm temperate type of the climate is denoted by the C type of the climate. Then what is the characteristics of the C type of the climate largely? We know that in C type of the climate, the average temperature of the coldest month is always above 3 degrees Celsius, but it is below 13 degrees Celsius. Temperature is between 3 degree to 13 degrees Celsius. And even in the coldest month, temperature is below 13 degrees Celsius. It is not more than 13 degrees Celsius. And precipitation is distributed in all the months of the year. We see that the rainfall occurs in whole year. And this C type of the climate is further divided in terms of CF climate, CW climate and CS climate. CF, CW and CA, or you can say that CS type of the climate. In terms of CF climate, I have already told you, F means forest, and more forest will occur where the rainfall occurs in whole part of the year. So the CF climate represents the precipitation throughout the year, and the precipitation is more than 1.2 inches in the driest month of the summer season. So the climate represents the Western Europe type of climate, and it is CF climate is also called as British type of the climate, that may be divided in terms of CFA and CFW. CFA means humid subtropical, CFB means marine west coast climate. जो कोस्टल एरिया है तो CFB, जो इनलैंड एरियाज है तो वो CFA. उसी तरीके से CW क्लाइमेट रिप्रेजेंट्स जहाँ कहीं भी W अगर कैपिटल लेटर के बीच में के बाद आता है तो W फॉर विंटर ड्राई, S फॉर समर ड्राई. तो टेम्परेट रीजन में ही जहाँ पे विंटर में रेनफॉल ना हो करके समर में रेनफॉल होता है तो उसको हम CW टाइप ऑफ द क्लाइमेट कहते हैं. CF climate, it means that the dry winter is dry and the rainfall occurs more than 10 times in the wettest month of the summer season. समर सीजन में जो रेनफॉल होता है वो 10 गुना ज़्यादा है विंटर सीजन से. और this type of the climate that is represented as the China type of the climate. CW climate को हम China type of the climate भी कहते हैं. And later on the CA climate, कई सारे स्कॉलर CA को CS climate कहते हैं. CS climate summer dry. तो CA climate or CS climates are the dry summers climate, where there is a 3 times more precipitation occurs in the wettest month of the winter season rather than the driest month of the summer season.
अगर विंटर में जहाँ बारिश हो रही है, जाड़े में जहाँ बारिश हो रही है, उस इलाके में हम ये कहते हैं कि सी एस टाइप ऑफ द क्लाइमेट है। और हम ये देखते हैं कि मेडिटेरेनियन जो कोस्ट है, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ जो क्लाइमेट है, जहाँ पे बारिश जाड़े में होती है, जहाँ पे सिट्रस फ्रूट, खट्टे मीठे पौधे जैसे ऑलिव, ऑरेंज, ग्रेप्स, वाइन्स, इन सब का जो है वाइन इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। तो मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट के आसपास के इलाके में सी ए क्लाइमेट, सी एस क्लाइमेट्स जो है मिलता है। लास्टली, नॉट लास्टली, बट डी टाइप ऑफ द क्लाइमेट, दैट इज द स्नो forest climate, or you can say that humid cold climates, that is called as the D type of the climate. And D type of the climate represents the tundra type of, not taiga type of the climate. The D type of the climate, or the climate D type of the climate is located in the snow covered forest region, where the coldest month is below -3 degrees Celsius, but the warmest month of the season is above 10 degrees Celsius. Ground surface is always covered with the snow, and for a larger part of the year, the ground is covered by the snow. And this type of the climate is further divided in terms of DF climate and DW climate. DF climate and DW climate. F means we already know, always रेनफॉल वाले रीजन जो है F क्लाइमेट में है। तो हाई लैटिट्यूड्स का स्नो कवर्ड रीजन जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होता है उसको हम DF क्लाइमेट में रखते हैं। दिस इज नोन एज ह्यूमिड कोल्ड क्लाइमेट। DF is always humid. This region is humid cold climate. This humid cold climate where the temperature is further very low and rainfall is high. This is the high relative humidity region and the snow covered areas where the rainforest is found in coniferous type of the forest is located. DF you can further classify as DFA and DFB. DFA means long warm summers, that is continental. DFB means long and cool summers, that is the marine climate. कहीं कहीं पे DFC क्लाइमेट भी दिया हुआ है। इसका मतलब है कि शॉर्ट समर एंड द सब आर्कटिक रीजन्स। DW एक दूसरा क्लाइमेट टाइप है, डी में ही DW। W मीन्स विंटर ड्राई। तो DW indicates about humid cold climates, dry winters, and it may be further divided into DWA and DWB. DWA means continental climate with long cool summer, and DWB means cool short summer subarctic type. Lastly, there is the polar type of the climate, and that is represented through the E type of the climate. Let us discuss about the polar climates, that is represented as E climate. E climate means polar climate. Polar region. Polar region climate. Polar region climate, that is represented as the temperature of the warmest month is always below 10 degrees Celsius. तापमान हमेशा, यहाँ तक कि जो गर्म वाला महीना है, सबसे वार्मेस्ट मंथ है, उसका भी तापमान हमेशा 10 डिग्री सेल्सियस से कम है। और इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, ET क्लाइमेट एंड EF क्लाइमेट। E एंड कैपिटल E, ET क्लाइमेट, ET एंड EF। ET क्लाइमेट रिप्रेजेंट्स द टुंड्रा टाइप ऑफ द क्लाइमेट। ET का मतलब T फॉर टुंड्रा एंड F मतलब, कैपिटल F मतलब ऑलवेज फ्रोजन। तो ET क्लाइमेट रिप्रेजेंट्स दैट टाइप ऑफ द क्लाइमेट वेयर द वार्मेस्ट मंथ आर बिलो 10 डिग्री सेल्सियस
and above 0 डिग्री सेल्सियस। जबकि कैपिटल ई और कैपिटल एफ क्लाइमेट, ये क्लाइमेट ऐसा है जो परमाफ्रॉस्ट क्लाइमेट है, जो एकदम 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स पे स्थित होता है। EF क्लाइमेट इज द परमानेंट स्नो फील्ड कवर्स क्लाइमेट, दैट इज द वार्मेस्ट मंथ or the temperature is always below 0 degree Celsius, where the soil is always covered with the snow, that is the always frozen characteristics are found in the EF climate. This Köppen's classification is very lucid and very popular among the geographers and among meteorologists. This is quantitative in nature. It is easy to remember, but there is the critique of the Köppen's classification also, because Köppen's has utilized the precipitation and temperature, and as well as in certain extent natural vegetation type as the basis of the classification. But he has not discussed about the effective precipitation, the rain spell, the amount of precipitation. He has not discussed about the nature of cloudiness, cloud cover, humidity conditions, moisture content, moisture level, and the other weather elements in his scheme. So he is also being criticized. लेकिन एक चीज़, एक इजी तरीका है कोपेन के स्कीम को रिमेंबर करने का, कि सबसे पहले आप एक ग्लोब पे सर्किल बनाइए। There must be a circle. This is the low latitudes area. That is the equator part of the world, 0 degree, और ये 90 डिग्री नॉर्थ है। This one is the 90 डिग्री साउथ। कोपेन का क्लासिफिकेशन को आप ए यहां से शुरू कीजिए, B, C, D एंड E। ए को आप ट्रॉपिकल रीजन में रखिए, बी को सब ट्रॉपिकल और द ड्राई डेजर्ट वाले रीजन में, ड्राई रीजन ऑफ द वर्ल्ड। सी को मिड लैटिट्यूड्स में है तो मिड लैटिट्यूड्स और द टेम्परेट रीजन, टेम्परेट बेल्ट। डी को स्नो कवर्ड एरिया, फॉरेस्ट रीजन, एंड ई को पोलर रीजन। इसी तरीके से ए, बी, सी, डी और ई फॉर पोल, डी फॉर स्नो कवर्ड साइबेरियन रीजन्स और द टाइगा फॉरेस्ट रीजन, सी फॉर टेम्परेट रीजन, बी फॉर डेजर्ट एंड ए फॉर ट्रॉपिकल रीजन। उसके बाद से ए में ट्रॉपिकल रीजन में रेनफॉल ज़्यादा जहाँ पे हो, AF मानसून जहाँ पे हो, AM जहाँ पे सवाना रीजन हो, AW। उसी तरीके से B, BS, BH, C, CF and CA and CW, DF and DW, E फॉर पोलर रीजन। तो एक स्केच के जरिए से, एक डायग्राम के जरिए से you can easily remember to the Köppen's scheme of the classification. And thank you so much for watching this video, and I hope that you may learn for this session. Thanks a lot and thank you so much.